Okay, so let's start the sessions. थोड़ा सा formality वाला part. So hi everyone. My name is Brijraj, and so I'm a tech lead at Actprof. Basically, we are working in a real estate-based startup. It's a prop tech company. And talking about our community, we are from TechFerment, where basically we are helping engineers or developers to thrive their careers. And also, I'm a Google developer expert for web technology and Firebase. सो थोड़ा सा मैं इस सेशन को मोर इंटरेक्टिव बनाऊंगा सो आई यूज हिंदी प्लस इंग्लिश सो दैट थोड़ा सा एक इंजॉयमेंट हो इट्स बेटर टू लाइक लिसनिंग वाला पार्ट से अच्छा है कि लाइक कुछ इंटरेक्शंस हो Cool. So I'll start like in this particular talk कि like क्या वेब पे अपन वर्क करते हैं तो मैं जावास्क्रिप्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वेब है क्या चीज एंड जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्या यूज कर रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए और लेट्स से वी आर यूजिंग meet.com google.meet so how javascript is working on it और इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है उसके बाद फिर विल work on the javascript वाला part कि like we'll create a simple applications. So पहले मैं बात करूँ about the India. So in India there are around like 932 millions monthly active users. Internet users are using internet over 930 millions monthly like smartphones. So it's a huge opportunity for us to make a solutions. Either it can be a mobile solutions, either it can be the web solutions like we can build. Uh, then talking about specifically for the web platform, so web is just like as an information system where we can share the informations. So let's say I'm using Google Meet and I'm sharing information with you with the help of Google Meet, with the help of internet. So this can be example for the web. Or if you are sharing any informations over WhatsApp, so this can be example for the web. So web is just like as an information system where we can share the informations with the help of internet or the network. Information can be anything. It may be PDF file, audio file, text file. It can be anything. And like then I'll talk about like कैसे ये particular internet और ये web कैसे work करता है. So इसकी मैं specifically बात करूँ तो like ये जो पूरा internet है, we are accessing this entire whole informations over the help of network. So ये सारी के सारी आपके informations they are coming with the help of these cable which is called as submarine cables. सो ये एक वेबसाइट है submarinecablesmaps.com. इस पे आप एकदम फ्लोटिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि लेट्स से इफ यू आर इन इंडिया रीजन एंड यू आर एक्सेसिंग अ वेबसाइट जिसका सर्वर एक्चुअली यूएस रीजन में है, तो आपका इंटरनेट कैसे फ्लो करके आपके रीजन में आ रहा है. So I'll give you the simple demo. So this is a website for the submarine cables. You can check out over the web like submarinecables.map.com. एंड यहाँ से आपको रियल टाइम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि लेट्स से यू आर इन इंडिया रीजन. सो इंडिया रीजन में कौन कौन सी केबल्स कनेक्टेड है जहाँ से आपको इंटरनेट का फ्लो मिल रहा है. सो लेट्स से कि एक मेरा सर्वर पड़ा है वो सऊदी अरबिया रीजन में है या कटार में. तो कटार से मेरी इन्फॉर्मेशन होती है ये सबमरीन केबल्स बोले या फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल बोले, इनके थ्रू फ्लोट होके इधर से इधर होके ये पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करता है. एंड देन वी हैव अ ग्राउंड लेवल मीडियम्स होते हैं कि जैसे आपके इंटरनेट है द एयरटेल और जियो, तो उन्होंने अपनी ग्राउंड लेवल पे अपनी वायरिंग करी हुई है इन टर्म्स ऑफ फाइबर्स की जियो फाइबर्स और मे बी द एयरटेल फाइबर्स. तो ग्राउंड लेवल पे आपकी कम्युनिकेशन टावर के थ्रू होती है और मे बी इट मे बी अराउंड द केबल्स. बट ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स है और कंट्रीज है, ये सारे के सारे आपके कनेक्ट करे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वायर्ड नेटवर्क. सो सडनली क्या होता है कि अचानक से जैसे ये केबल्स होती है बिछी हुई है पूरे वर्ल्ड में लाइक इन द सी. सो सी के अंदर केबल बिछी हुई तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स इन टर्म्स ऑफ लाइक शार्क अटैक हो जाता है, केबल्स काट देती है. तो आई गिव शो यू द डेमो लाइक सबमरीन केबल शार्क अटैक. तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि सडनली क्या होता है कि लाइक कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं कि लाइक उनका इंटरनेट बीच में डाउन हो जाता है या मे बी किसी कंट्री को मेरे को बंद करना है तो मेरे को कंट्री का पूरा इंटरनेट बंद कर दो तो कंट्री का स्टॉक मार्केट पूरा चला जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट द लाइक द सिक्योरिटी और लाइक इंटरनेट अटैक्स. तो जनरली हैकर्स क्या करते हैं कि ये जो केबल होती है इनको डिस्ट्रॉय करते हैं क्योंकि कंट्री का ये चैनल पॉइंट ही खत्म हो गया तो इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं जाएगी. और ये केबल्स होती है ये बेसिकली ये पूरी सी लेवल पे बिछी हुई है केबल्स. अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाओगे मे बी वियतनाम और इंडोनेशिया और इफ यू आर इन मुंबई रीजन, सो जुहू बीच के साइड में ये आपको ऐसे केबल्स दिखेगी दिखेगी सारी केबल्स
कुछ श्रीलंका में जा रही है, कुछ केबल्स आपकी दुबई रीजन में जा रही है, और इनके थ्रू आपका इंटरनेट आ रहा है। और इन केबल की जो वही फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू आपका इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो इनकी स्पीड वही लाइट की स्पीड की इन्फॉर्मेशन के थ्रू होती है। और ये पूरा केबल्स को मैनेज करने की कुछ कंपनीज़ होती है, सो यू कैन चेक आउट द मैप एंड यू कैन फाइंड द इन्फॉर्मेशन कि लाइक ये कंपनियाँ इस केबल की ओनर है। ओनर इन टर्म्स ऑफ कि लाइक दे आर मैनेजिंग दिस इंटरनेट और द केबल। और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इन टर्म्स ऑफ एयरटेल, जियो, वोडाफोन, सो दे आर लाइक डूइंग अ रेंटल टेनेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशंस, लाइक वो बैंडविड्थ लेते हैं उस केबल की कि लाइक हाँ, इतना पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस हम एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका आपको रेंटल चार्जेस इतना पे करना होगा इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये पूरा आपका इंटरनेट है, कुछ इस तरीके से वर्क करता है। सो लेट्स से कि लाइक आई हैव अ फ्रेंड, लेट्स से इन मान लेते हैं कि यूएसए रीजन। सो वो जैसे ही मेरे को मैसेज करता है, तो उसकी मैसेज की पहले इन्फॉर्मेशन होती है, वो यूएसए में इधर से फ्लोट होके इधर आएगी, और फिर बाद में इन केबल्स के थ्रू फ्लोट होके इधर-उधर जा के फिर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये एक ऑर्डिनरी सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि लाइक हाउ इंटरनेट इज़ वर्किंग। एंड देन आई विल टॉक अबाउट लाइक जब इंटरनेट की बात करते हैं, तो देयर इज़ लाइक हाउ वी कैन एक्सेस द इन्फॉर्मेशन। सो वी कैन एक्सेस द इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वेब सॉल्यूशंस। सो वेब सॉल्यूशन में मेनली 3 पार्ट होते हैं। अपना होता है वेबसाइट कि लाइक इंटरनेट अपन एक्सेस कर रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग अ वेबसाइट। So website is just like as a Wikipedia, Facebook, Instagram. There are multiple social media platforms, or it may be around the documentations, tutorials if you are working on a web development field. So talking about specifically for the website, so website is just like as a collections of web page, and we can create a web page with the help of HTML, CSS, and the JavaScript part. So HTML के थ्रू अपन वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, CSS के थ्रू वी कैन डिजाइन, JavaScript के थ्रू वी कैन कस्टमाइज. So I'll talk about JavaScript more in details in the upcoming slide. So just मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ in terms of web fundamentals. So जैसे ही आपने वेबसाइट क्रिएट कर दी, वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन HTML, CSS एंड JavaScript. इन पे वर्क करने के बाद वी नीड टू टेस्ट आवर वेबसाइट। तो वेबसाइट को आप टेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र्स। ब्राउज़र इज़ जस्ट लाइक एज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशंस दैट यू कैन इंस्टॉल इन योर मशीन। सो जैसे कि क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है। So these type of browsers you can install and you can access these website. So टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर द वेब ब्राउज़र, सो ब्राउज़र में क्या होता है कि लाइक इंजन होता है, वो क्या करता है आपके एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के कोड को एज़ अ इनपुट लेता है, एंड देन दे विल रेंडर द कोड इनटू द यूआई पार्ट। ये बेसिकली फंडामेंटल होता है अबाउट द वेब ब्राउज़र्स। सो इनके अंदर एक इंजन कहलाता है रेंडरिंग इंजन दैट विल रेंडर योर एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट कोड इनटू द यूआई पार्ट, एंड देन यू विल बी एबल टू सी द वेबसाइट. And talking about specifically for the rendering engine, so like market में बहुत सारे browsers है, but talking about as a developer perspective, so here is the three most popular browsers like Google Chrome, Microsoft Edge, Edge and Safari. So Google Chrome में main इनका जो engine होता है वो बोलते हैं Blink. Blink के थ्रू आपको पूरा का पूरा आपकी वेबसाइट है, वेब पेज है, ब्राउजर की सेटिंग है, वो सारी आप एक्सेस कर सकते हो. But for the JavaScript purpose, they have designed another engine which is called as Chrome V8 engine. और ये सारे इंजन इन्होंने डिफाइन करे गए हैं विद द हेल्प ऑफ C++ लैंग्वेज, एंड which is an open source project. And if you are working on a Google open source campaign, then you can participate and you can contribute in the open source community. And talking about specifically for the Microsoft Edge, इनका एक मेन ऑर्डिनरी इंजन है which is called as HTML, and for JavaScript they have defined Chakra, and Safari के लिए WebKit. So ये सारे इंजन है. इंजन इज जस्ट लाइक एज अ प्रोसेसर कि लाइक जैसे अपन मोबाइल परचेज करने जाते हैं, तो वी बेसिकली वी चेक कि लाइक कितना प्रोसेसर है, कितना रैम है, उसके बेसिस पे अपन मोबाइल सेलेक्ट करते हैं. तो सिमिलरली इन द मार्केट, इफ आई टॉक अबाउट एज अ वेब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, so in the market we have a multiple browsers. Then we need to check out the browsers engines, like कौन-कौन से engines हैं, engines में क्या-क्या facilities है, as a developer point of view कि वो engine मेरे को क्या-क्या enhancement कर सकते हैं. Maybe in terms of कि like what type of features I can make with the help of these engine. So ये आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो you will talk you will to know about lot of things in terms of engine rendering, जो compiler designing वाला part आता है. But talking about the phase two, like once you have created a web applications and can test the website with the help of browser, now we need a server. Server is just like as okay, where you can upload your HTML, CSS, and the JavaScript code
into the डब्बा, the CPU, जैसे पुराने ज़माने में होता था अपने पास एक CPU होता था प्रोसेसर, उस प्रोसेसर में हार्ड ड्राइव होती थी और मे बी अ, अगर आप पुराने ज़माने में बात करो तो जब सीडी भी नहीं होती थी, वी हैव अ फ्लॉपी ड्राइव। तो फ्लॉपी में हमारे पास मैक्सिमम 15 एमबी का स्पेस होता था। तो उस टाइम में हम गाने स्टोर करते थे तो मतलब गाने हमारे पास होते थे अराउंड 100 एमबी के, तो फ्लॉपी की हमारी डिस्क पड़ती थी इतनी सारी। मतलब एक सूटकेस भर के फ्लॉपियाँ पड़ी रहती थी क्योंकि फ्लॉपी की मैक्सिमम साइज़ 15 एमबी होती थी। फिर उसके बाद सीडी आया, उसके बाद डीवीडी आया, देन वी हैव अ पेन ड्राइव एंड देन वी हैव एक्सटर्नल ड्राइव्स। सो ऐसे टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट हुआ है। सो सो टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली सर्वर, सर्वर इज़ जस्ट लाइक एज़ अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। उस कंप्यूटर को आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है और उस कंप्यूटर में आपके एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के कोड पड़े हुए हैं। और उस सर्वर पे आपने एक स्पेसिफिक एक वेब सर्वर नाम का एक प्रोग्राम आपने इंस्टॉल कर दिया है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट होती है लाइव हो जाएगी। तो सर्वर इज़ जस्ट लाइक एज़ अ नॉर्मल कंप्यूटर, जिसको अपन ने डिज़ाइन ही करा गया है, जो प्रोसेस को लेगा और प्रोसेस को आगे भेज देगा। किसको भेजेगा? क्लाइंट को, क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ द वेबसाइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू, सो मार्केट में 3 टाइप के आपके सर्वर होते हैं। इट्स जस्ट लाइक एज़ अ वेब सर्वर व्हिच इज़ रिस्पांसिबल फॉर रनिंग योर वेबसाइट। ईमेल सर्वर व्हिच इज़ बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर सेंडिंग और रिसीविंग अ मेल, लाइक जैसे आपको ईमेल आता है, तो ईमेल आने के लिए एक आपका डेडिकेटेड सर्वर होता है जिसका नाम होता है वेब सर्वर, ईमेल सर्वर। यहाँ मेनली 2 प्रोटोकॉल पे वर्क करते हो आप, एसएमटीपी और पीओपी, लाइक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बट ईमेल सर्वर्स होते हैं वो प्राइवेट सर्वर होते हैं कि लाइक जैसे कि मैं खुद का ईमेल सर्वर क्रिएट नहीं कर सकता, ऑल्दो आई कैन, बट ये है कि लाइक उसके लिए मेरे को हाईली बहुत एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज़ ईमेल इज़ वेरी, वेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस। कि ऐसे मैं खुद का ईमेल बना दूँ, लेट्स से vijarat@microsoft.com, और डायरेक्टली मैं आपको रीच आउट कर दूँ कि या कांग्रेचुलेशन यू बीन सेलेक्टेड, और मैंने ईमेल आईडी फेक क्रिएट कर दी। तो ऐसे मैं कर नहीं सकता बिकॉज़ ईमेल इज़ अ प्राइवेसी इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट थिंग्स। तो ईमेल सर्वर पे का एक्सेस होता है वो पब्लिक नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि लाइक देयर आर सम सेट ऑफ ऑर्गनाइजेशंस हू हैव अ एक्सेस, हू हैव अ लाइक पोर्ट नंबर का एक्सेस होता है जो ईमेल क्रिएट करती है लोगों का। लेट्स से जीमेल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, एंड देयर आर मल्टीपल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जिसके थ्रू आप ईमेल क्रिएट करते हो या ईमेल सर्वर्स को एक्सेस करते हो। Or but talking about specifically for the web server, so web server is open, like anyone can download, anyone can set up the web server, anyone can install the website, anyone can host their website in different server. And then we have a file server. File server is responsible for downloading, uploading a file over the network. So जैसे आप यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, मे बी इफ यू आर डाउनलोडिंग एनी फाइल्स ओवर लाइक एनी सिस्टम, तो वो सारा सिस्टम फाइल डाउनलोड करने के लिए एक बनाना होगा, वो सर्वर करेगा वो प्रोसेसिंग, वो आपका होगा फाइल सर्वर। फाइल सर्वर पे वी नीड टू वर्क ऑन द प्रोटोकॉल कॉल्ड एज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो अगर आप आईडीएम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आपने कभी यूज लिया होगा, सो इफ यू गो टू द सोर्स फाइल ऑफ योर डाउनलोड फाइल, देन यू कैन फाइंड द इन्फॉर्मेशंस कि लाइक आपका रूट फाइल का एड्रेस होता है एफटीपी स्लैश फाइल पाथ, द सर्वर पाथ, जो आपके फाइल सर्वर पे डिनोट करता है। बट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर द वेब डेवलपर्स, तो जनरली अपन वेब इकोसिस्टम पे वर्क करते हैं, तो वी नीड टू बेसिकली वर्क ऑन द वेब सर्वर पार्ट बिकॉज वी नीड टू मेक अ वेबसाइट, वी नीड टू क्रिएट अ वेब सॉल्यूशंस, बैक एंड लॉजिक, फ्रंट एंड लॉजिक। बट ईमेल वाला पार्ट बहुत रेयर होता है बिकॉज देयर आर सम सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव एक्सेस, दे कैन क्रिएट अ ईमेल सर्वर्स। फाइल सर्वर इज अ पब्लिक सर्वर्स, लाइक कोई भी खुद का एक फाइल सर्वर क्रिएट कर लेता है। जैसे आपको मे बी इफ आर इन कॉलेजेस, तो कॉलेजेस में लोग अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर देते थे सेम वाईफाई और सेम नेटवर्क के थ्रू और फाइल शेयर कर देते थे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ फाइल सर्वर। सो एक सर्वर बन जाता था आपका फाइल का और वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता था दूसरे लैपटॉप को और दूसरे सिस्टम को। So this is all about the simple terminologies like how web ecosystem is working. Like we can create a website with the help of HTML, CSS, JavaScript. We can test our website with the help of browsers. We can host our web solutions with the help of server. And server में भी basically अपने तीन type होते हैं, web server, email server, and the file server. Then we have another technology is called as database where we can store the informations. Information अपन को कुछ इस तरीके से store करनी है कि then we can perform CRUD operations, means create, read, update, and delete operations. And in the market we have a two type of database like structured database and unstructured database. जहाँ आपको स्ट्रक्चरल डेटा पे वर्क करना होगा तो वहाँ आप यूज़ ले सकते हो माई सिक्वल, पोस्टग्रेसql, देयर आर मल्टीपल structural database that you can work on it.
And talking about unstructured database, so unstructured data means unorganized data कि like जैसे कि if you are using Facebook, तो Facebook में आपका कोई वो पैटर्न नहीं रहता है कि like आपके मूड पे डिपेंड करता है कि लेट्स से यू हैव एन मूड कि लाइक आपने टेक्स्ट शेयर कर दिया एज अ पोस्ट, आपने अगले दिन वीडियो शेयर कर दिया, आपने अगले दिन एक पोस्ट शेयर कर दी जिसमें इमेज कंटेंट थी, और मे बी अगले दिन आपने एक गिफ फाइल शेयर कर दी. So this is a kind of random information or the unstructured information. So you can store these kind of unstructured information in unstructured database. So market में बहुत सारे database होते हैं unstructured के like Cassandra, MongoDB, the Cloud File Store. There are multiple database, unstructured database that you can use for storing unstructured information. Then like as I mentioned, like with the help of these things, like you can create anything. Web has endless possibilities. Like कोई कुछ भी कर सकता है web में. It's a reality. Like you just need a basic understanding about the fundamentals, and then you can make anything. And like this is just like as a quotation. Then talking about specifically for the web development, like we can work on the web as a front end developer, back end developer, or the full stack developer. Like talking about specifically for the front end developer, we need to focus on the client side, the browser end. We need to create a website with the help of HTML, CSS, JavaScript part. We can design the web page with the help of CSS. It's all about like designing a web page or the best practices about the front end technologies. And talking about the careers, like you can start your career in the front end developers, like you can work on HTML, CSS, JavaScript. Once you have enough level of experience in the fundamental language, then you can work on the core languages, the framework or the libraries. Like you can use Angular, Vue, React, or Bootstrap. And then we have a backend development. Like as a backend developers, you need to work on the web server part and the database part. You need to create a lot of amount of backend business logic in which is called as REST APIs, or the backend like the functions, we can say, or the REST APIs. So यहाँ आपको basically वही server, database, security, the data collections from the server and client को throw करना, वो सारे logic पे work करना पड़ता है. And you can start working on a backend development. So here are the main basic languages that you can use. Like अगर आप JavaScript पे work कर रहे हो, तो you can go with JavaScript, Node.js, or if you're working on PHP, you can use PHP or Python. You can use for backend developer. And then thoda sa complexity aa jaye, then we need to focus on the front end, the frameworks or the libraries. So if you are working on Node.js or JavaScript, then you can use Express.js for making more scalable, robust backend logic. Or if you're working on a Python, then you can use Django or REST Flask. And then if you're working on a Ruby language, then you can use backend language framework, which is called as Ruby on Rails. And the last one part is Laravel. Like जब आप PHP में backend बनाओ और उसको आप scale करना चाहो, तो you can use these Laravel framework for making more robust solutions. And as a backend developer, you need to work on the database part. Like you can use MongoDB, you can use MySQL. Again, it's based on the problem statement, like whether you are dealing with structured database or unstructured data. And then we have another terminology is called as full stack development, which is called as God. Like सब किसी को किसी का knowledge होता है ये, right? So like full stack development is just like कि आपको front end का भी knowledge है, back end का भी knowledge है, and then we have a like the terminology is called as mean stack, burn stack, and mount stack. So ये सारे categorize करेंगे इस तरीके से. Then like this is just like as a fundamentals, but talking about specifically for the JavaScript, like HTML से आपका page का structure बनेगा, CSS से you can design, but with the help of JavaScript you can customize your web page. And talking about specifically for the JavaScript, तो JavaScript market में बहुत ज़्यादा popular language है. If you go to the Stack Overflow, you will find the information. The most popular programming language is JavaScript. It's a fastest growing language. Like everyone is using JavaScript because with the help of JavaScript we can build anything. Big giant companies are using JavaScript, and you can do anything with the help of JavaScript. And talking about the main part, like with the help of JavaScript you can make interactive page in terms of कि let's say आपने एक HTML का page define करा, you can design the page with the help of CSS. But if you want to add some elements के like जैसे कि button पे आप click करो, we want to change the background color of website,
when we click on that particular button. So you can perform these kind of actions or maybe the interactions with the help of JavaScript. You can do that. And with the help of JavaScript, you can do anything. So first, like you can create a website, the web applications. Even you can create a website, mobile applications. So if you are working, if you know, like there is a framework called as React Native. With the help of React Native, we can create a mobile applications or Cordova. There is another framework जिसके थ्रू आप पूरी की पूरी mob like if you are working on JavaScript, you can make mobile applications. And then even also you can create real time applications, real time networking applications. जैसे कि आपने टर्मिनल देखे होंगे कि टर्मिनल के थ्रू लोग कम्युनिकेट करते हैं, इट्स जस्ट लाइक एज अ व्हाट्सएप. So you can create a real time networking applications with the help of JavaScript. And also you can create a command line tools, like if you are working on a GCP or AWS or Azure, तो वो आपने CLI देखे होंगे, कमांड लाइन टूल्स. तो उन्हीं पोर्टल में आप जाके एक CLI को एक्सेस करते हो, वो शेल पे वर्क करते हो. तो वो शेल होती है, यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. इवन यू कैन क्रिएट योर ओन शेल कि वो कमांड लाइन टूल्स आपने खुद का बना दिया, उसके थ्रू आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो. मे बी विद द हेल्प ऑफ दैट कमांड लाइन टूल्स यू कैन एक्सेसिंग योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. And then you can create a games. जैसे आपने सुना होगा PUBG. So there is a concept of online gaming. Online gaming is more about कि like जैसे कि मेरे को खेलना है GTA 5. So GTA 5 is more extensive game in terms of RAM point of view, because if I have a laptop having a RAM of about 2 GB, which is not enough for the GTA 5. तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि लैपटॉप परचेज करना पड़ेगा, उसकी रैम इंक्रीज करनी पड़ेगी, देन वी नीड टू वर्क ऑन द ग्राफिक्स कार्ड, वो सारा वर्क करना पड़ेगा. बट व्हाट इफ लाइक जैसे ही आप ब्राउजर ओपन करो और ब्राउजर के थ्रू आप गेम को एक्सेस कर सकते हो. दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग गेमिंग. तो वो अभी मार्केट में बहुत कॉन्सेप्ट आ गया कि लाइक स्टेडिया. सो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, देयर आर मल्टीपल गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर कि जैसे ही आप ब्राउजर के थ्रू आप गेम खेल सकते हो. यू डोंट नीड अ हाई अमाउंट ऑफ मेमोरीज, हाई अमाउंट ऑफ ग्राफिक्स कार्ड, सीपीयू, जीपीयू, ये सारे की जरूरत नहीं है. जस्ट आप ब्राउजर ओपन करो, ब्राउजर के थ्रू आप पोर्टल पे लॉग इन करो और आपकी स्ट्रीमिंग के थ्रू आप गेम खेल सकते हो. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. बट ये सारा बेसिक फंक्शनलिटी है लाइक जावास्क्रिप्ट के थ्रू व्हाट वी कैन डू. अभी मैं कोड पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा हूँ, इट्स जस्ट मोर अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, बट इट्स मोर इंटरेक्टिव. सो जनरली जावास्क्रिप्ट के कोड कैसे रन होते हैं, आई विल टॉक अबाउट. सो जनरली क्या होता है कि लाइक वी हैव अ ब्राउजर के अंदर मैंने जैसे बताया था कि वी हैव अ रेंडरिंग इंजन. सो रेंडरिंग इंजन में एक मेन रेंडरिंग इंजन होता है और एक होता है आपका जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए अलग से इंजन, विच इज कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट इंजन. So we have a browser. Inside browser, there is an engine called as JavaScript engine, जहाँ आपके JavaScript के कोड चलते हैं. So I'll give you the example. Like if you are using Google Chrome, so we have a JavaScript engine name is Chrome V8 engine, जहाँ आपके JavaScript के कोड रन होंगे. So ये इंजन होता है, इस इंजन के कारण ही आपके JavaScript के कोड रन हो रहे हैं और ये इंजन के अंदर ही वेरिएबल्स आपके क्रिएट होते हैं. इनका एग्जिस्टेंस वेरिएबल का पूरा स्कोप ये पूरा इंजन के अंदर ही होता है. और ये इंजन मार्केट में बहुत सारे मिले हुए हैं, जैसे कि क्रोम V8 है जो गूगल का इंजन है, और मे बी फायरफॉक्स का आपने सुना होगा, स्पाइडर मंकी. देयर आर मल्टीपल जावास्क्रिप्ट इंजन दैट यू कैन सर्च ओवर द नेट एंड यू कैन फाइंड. एंड लाइक कुछ ओपन सोर्स भी है, जैसे कि मैं चेक आप देखोगे तो क्रोम V8 का पूरा ओपन सोर्स कोड है V8 का कि लाइक कैसे इंजन बना हुआ है और इस इंजन के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड कैसे रन कर रहे हैं. बट एक प्रॉब्लम क्या थी कि लाइक इनिशियली जावास्क्रिप्ट को मेरे को रन करना पड़ता था, तो मेरे को जावास्क्रिप्ट के कोड होते थे वो एचटीएमएल के साथ लिखने पड़ते थे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग. कि लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन एचटीएमएल, तो इन एचटीएमएल वी हैव अ सेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट टैग, SRCF स्क्रिप्ट टैग. स्क्रिप्ट टैग के अंदर वी हैव टू इंजेक्ट द जावास्क्रिप्ट कोड, और वो जावास्क्रिप्ट के कोड होते थे वो आपके रन होते थे ब्राउजर, और ब्राउजर के अंदर इंजन के अंदर जाते थे और आपका वो आउटपुट देते थे जावास्क्रिप्ट का. But problem is कि like I cannot run the JavaScript code outside the browsers. कि like एक ब्राउजर मेरे को डायरेक्टली मैंने एक JS फाइल क्रिएट करी इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम या माय ऑपरेटिंग सिस्टम, और डायरेक्टली मैंने ओपन करा उस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट को, तो मेरा वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वो कहेगा कि आपके जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए मेरे को इंजन ही मिल रहा नहीं है, बिकॉज वो इंजन अपना ब्राउजर के अंदर है. तो ब्राउजर के अंदर ही इंजन है, तो मैं क्रोम को मतलब मेरे जावास्क्रिप्ट को कोड चलाना है तो मेरे को केवल इंजन ही चाहिएगा. दैट मीन्स कि लाइक ब्राउजर.
So initially, JavaScript is called as client-side language. Client-side language that means कि like JavaScript के code मेरे को run करना है तो on the client, mean the browser I can run. Outside the browser I cannot run. कि लाइक जावास्क्रिप्ट के कोड को मेरे को रन करना है तो ब्राउज़र ही चाहिएगा और क्योंकि ब्राउज़र के अंदर इंजन है। तो इसलिए इसको बोल दिया गया क्लाइंट साइड लैंग्वेज एंड देन कुछ लोगों के दिमाग में आया कि यार मेरे की ये तो गड़बड़ी है कि लाइक आई कैन नॉट रन द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउज़र्स कि लाइक विदाउट द हेल्प ऑफ ब्राउज़र्स इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हाउ कैन आई रन द जावास्क्रिप्ट कोड? तो एक पर्सन था जिसका नाम था रायन डॉल। सो उसने क्या करा बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का इंजन था उसको उठाया अलग से उस इंजन का नाम था क्रोम V8 इंजन, उसको उठा के उसका एक एनवायरनमेंट बनाया सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो बनाया था सी प्लस प्लस में जिसको ये इंजन रन करता था और इसको बोल दिया गया नोड जेएस तो नोड जेएस इज जस्ट लाइक एज अ रन टाइम एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस नोड जेएस वी कैन रन द जावास्क्रिप्ट कोड directly in the operating system without the help of the Chrome browsers, right? So थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि लाइक initially JavaScript is a client side language just because of कि like I cannot run the JavaScript code outside the browser. That's why like earlier we called as client side language. But after Node.js, we can run the JavaScript code directly into the operating system. That means it's called it server side language. तो मार्केट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया आफ्टर द नोड जेएस कि लाइक आपकी जावास्क्रिप्ट क्या है सो जावास्क्रिप्ट इज जस्ट लाइक एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज इट इज आल्सो अ सर्वर साइड लैंग्वेज means the client side means I can create interactive applications. The server side language that means I can create more robust scalable solutions. So इसलिए जावास्क्रिप्ट और मार्केट में पॉपुलर होने लगी जस्ट बिकॉज ऑफ कि लाइक जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्टली मैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ. So if you are working on a C++ or the Python, so we have a concept of file input output. Like we can create a file, we can read the file, we can update the file in C++ or the Python, right? Or maybe Java. That means कि ये जो आपकी लैंग्वेजेस है वो डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करती है कि लाइक एक मैं C++ का प्रोग्राम बना सकता हूँ मे बी जावा का प्रोग्राम बना सकता हूँ मे बी पाइथन का प्रोग्राम बना सकता हूँ जो डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सी ड्राइव ई ड्राइव की फाइल को पिक करेगी रीड करेगी राइट करेगी आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी रन कर रही है इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो सिमिलरली आई कैन क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट फाइल कि Node.js के थ्रू मैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट कर सकता हूँ. तो उस Node.js के आने के कारण इट्स मोर अबाउट सर्वर साइड रेंडरिंग. सो इससे मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता है. इट मे बी अराउंड द मोबाइल एप्लीकेशंस, it may be about the game applications. I can do multiple things with the help of Node.js. So थोड़ा सा ये और भी बताया था कि लाइक अबाउट द बेसिक आई गेस लाइक किसी के यूजफुल होगा बिकॉज लोगों ने कहीं सुना नहीं होगा कि लाइक जावास्क्रिप्ट कैसे मार्केट पे चल रही है. बट इफ आई टॉक अबाउट लाइक एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू आई एम वर्किंग ऑन अ जावास्क्रिप्ट. सो जावास्क्रिप्ट में कैसे रन करते हैं तो लाइक एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन अ फ्रंट एंड डेवलपर यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट. लाइक फ्रंट एंड डेवलपर जावास्क्रिप्ट को यूज लेते हैं इंटरैक्टिव बनाने के लिए वेब पेज को कि लाइक एक बटन पे क्लिक करा वी कैन शो मॉडल वी कैन शो साइड बार नैप बार वी कैन परफॉर्म numerous type of actions. Or if you are working on a framework like Angular, React or Vue, or maybe there are multiple frameworks, so you can use JavaScript for making more interactive robust scalable web solutions, right? And then like if you are a backend developer, yes, I have talked about the Node.js. So with the help of Node.js we can directly interact with the server, means the operating system. That means we can create a backend applications. We can perform actions like I can read the file, like server से आप file read करते हो उसको export कर देते हैं as a Excel sheet में CSV file. We can perform multiple things. एंड एज अ बैक फुल स्टैक डेवलपर्स लाइक जहाँ आपको फ्रंट एंड का भी काम करना है बैक एंड पे भी काम करना है यू कैन बी अ developers like the full stack developer and you can work on the JavaScript part. And then कुछ एक concept आता है कि like this concept is called as ECMAScript versus JavaScript. So अभी तक मैं थोड़ा सा इसको break लेना चाहता हूँ. I just want to collect the feedback from you all. Uh, is there any questions? ये टाइप स्क्रिप्ट इसी पे बेस्ड है क्या? Yeah, it's a part of the JavaScript. It's a superset. I'll talk. ओके 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 श्योर. Yeah. Any other questions? Yeah, hello, Rich. Yeah. So
my question is, you have, Yeah, sorry for interrupting. no worries. Yeah, as my question is all about that you have told about the use case of JavaScript, means, Hmm. especially for full stack developers, front end developers, and back end developers. Right, So when it comes for the visualization, data visualization, right. so we have heard only about d3.js. So can you elaborate about it? Sorry, the framework name is. d3.js. Okay, so there are multiple frameworks based on the JavaScript. Like अगर आप जाओगे, so there is a called as 3.js. अगर आपने सुना होगा, deeply.js, 3.js. There are multiple JavaScript framework based on the use case they have created. So let's say if you are working on 3D rendering part, तो वो आपकी use cases पे depend करेगा कि like you can use any JavaScript libraries or the frameworks. So ये market में बने हुए हैं. You just need to follow the documentations and based on the use case you can work on it. So अभी market में अभी आपका चल रहा है 3.js. अगर आप search करोगे Google पे, सो अभी आप देखोगे ना कि मार्केट में बहुत सारे 3D वेबसाइट आती है विजुअलाइज करी हुई कि लाइक देयर विल बी सम 3D एनिमेशंस, ग्राफिक्स लाइब्रेरीज, you can make more in games with the help of 3.js. So similarly, I don't have an experience with the framework you have shared, but it's more related to JavaScript libraries. So you can find the documentations and you can get the informations. Yeah, okay. Thank you. Yeah. So, what is the difference between framework and a library for JavaScript इसको मैं part? सिंपल वे में आपको बोलूंगा, फ्रेमवर्क इज मोर अबाउट फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट. कि लाइक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट में क्या होता है कि लाइक आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आना है और रहना है. And talking about the libraries, library is more about unfurnished flat or semi furnished flat. कि जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस परचेज करा. जैसे आप फ्लैट में चले गए, अगर आपको टीवी चाहिए तो आप टीवी एक्सटर्नल लेके आ गए. आपको फ्रिज चाहिए तो आपने एक्सटर्नल फ्रिज लिया है. तो लाइब्रेरी इज मोर अबाउट दीज फंक्शनलिटी की लाइक आपको कुछ भी चाहिए तो आप एक्सटर्नल में जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है या मे बी जावास्क्रिप्ट फंक्शंस है उनको आप यूज कर सकते हो अपने पार्ट में. So framework होता है fully functionality. JavaScript libraries is just like as कि some set of functions are predefined, and if you want to use any other functionality, then you can import. Okay, okay, so got तो इसको मैं सिंपल वे में बोलूंगा, सेमी फर्निश्ड फ्लैट और एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट. फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट it. में सब कुछ मिलेगा, एसी, फ्रिज, टीवी. आपको कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन एंगुलर और Vue.js, so there is no such kind of dependency कि like आपको HTTP कॉल करना है तो there are predefined functions. The functionality they have defined HTTP client. बट इफ यू आर यूजिंग रिएक्ट, तो रिएक्ट में क्या है कि बेसिकली आपकी राउटर लाइब्रेरी अलग है, वो HTTP कॉल का अलग पार्ट बना हुआ है, बिकॉज उन्होंने सेटअप फंक्शनलिटी अलग अलग डिफाइन करी हुई है. अब आपको यूज नहीं है तो लो, अदरवाइज लाइक यू कैन वर्क ऑन द प्रोजेक्ट पार्ट. Okay, sir. Yeah, I got it. Okay, now I'll talk about the ECMAScript and JavaScript part. I have So a question. yeah. Actually, whatever I gone through JavaScript, so it basically not obey any rules. Okay, Mhm. suppose I create a object, then I can assign anything. Right, right. So can you refer any books, ebooks, or anything so that we can got some syntax like yeah, I can do like this. So I'll talk about this part. yeah. Okay, so Another talking. another question. Yeah, So you have mentioned the Express.js, okay, in the yeah, full stack development, in right. stack and one stack, okay. So already there are other things are there. Then what is the need of Express.js? So AngularJS is there, Node.js is there. In the same, okay, MongoDB, then Express.js, then Monstack, MER, Right. React.js, then okay. Then what is the role of Express.js? It's providing framework or anything? So again, like it's based on the functionality. Let's say if you want to create a very simple applications, backend applications, then you can use the core concept of Node.js. But if you want to create a REST APIs, we're having a multiple functionalities. Let's say we have a multiple routes, we have a middleware, we have a n number of security we wanted to add in the route, we want to add sub route. Then you can achieve with the help of Express.js. So like either like without the express, you can create a scalable applications, but which is not good in terms of maintenance point of view. Because as a developer point of view, we need to write a code
which having a less amount of lines of code but having a multiple functionalities. एक ऐसा functions जो आपका multiple work करे but code कम हो. इसको एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं आपका उप्स का, कि लाइक मेथड ओवरराइडिंग, और एक सुना होगा पॉलीमॉर्फिज्म. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कि लाइक आपका एक ऐसा फंक्शंस बनाना है कि जो इनपुट मल्टीपल ले और आउटपुट भी मल्टीपल दे, बट ये कि आपका लाइंस ऑफ कोड कम से कम होना चाहिए. सो यू कैन यूज दिस लाइक बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अगेन, like you can create Facebook, you can create LinkedIn, you can create Twitter applications with the help of core fundamental, like with the help of HTML, CSS and JavaScript. But you need to write a lot of amount of code in terms of HTML, in terms of CSS, in terms of JavaScript. But if you want to use the framework, like you can use for the front end, you can use Angular, React, JavaScript, the Vue. So आपके कोड कम हो जाएंगे, आपको फंक्शनलिटी पे फोकस होगा, right? So with the help of framework, you can focus on the productivity wala part rather than writing a same amount of code multiple times. Because with the help of framework, this will give you the functionalities like components. Like components, it's more about कि like एक function से अपने एक logic लिख लिया, we can reuse this particular logic in multiple. तो एक्सप्रेस जेएस को हम लोग फ्रेमवर्क समझ जाएंगे कि ये फ्रेमवर्क. Yeah, it's a framework because having there are multiple functionality you can. Okay, thank you. Yeah, I can continue. Okay, so now I'll talk about the ECMAScript part and the JavaScript part. So market में JavaScript थी ना, वो बहुत पहले आ गई थी, and there is no such specific guidelines कि like JavaScript को कैसे use लिखना है. Because if you are working on a JavaScript, there is a lot of confusion कि कोई बोलता है कि कोई ऐसे कोड लिख लो, कोई बोलता है ऐसे कोड लिख लो, कोई बोलता है ऐसे कोड लिख लो, but कोड चल जाता है. But again, कुछ समझ में नहीं आता कि कोड कैसे चल रहा है. Because JavaScript is more about काम नहीं करता है, right? कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है, because JavaScript is just like as an open playground. So let's say कि मैं बोलूँ कि आपको एक मैं open एक ground दे देता हूँ, you can create anything, you can create building, you can create stadium, you can create hospital. It's just like as an open playground. और JavaScript में कोई standard भी नहीं है, because ये मैं अर्ली बात करूँ तो देयर इज नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कि लाइक कोड कैसे लिखे. कोई कुछ भी कोड लिख लेता था और अपना काम कर लेता था. बट देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज एक्मा. एक्मा की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशनल मशीन एसोसिएशन, आई गेस. इन्होंने क्या करा कि जावास्क्रिप्ट का एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करी कि लाइक दिस इज द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दैट यू कैन फॉलो फॉर मेकिंग बेस्ट लॉजिक फॉर द जावास्क्रिप्ट. कि लाइक आप एक्मा के कॉन्सेप्ट ले लो, इनके गाइडलाइंस ले लो, आप इसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट को लिखोगे तो आपका एक स्टैंडर्ड बनेगा, और कॉर्पोरेट में ये स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो आपका कोड भी अंडरस्टैंडिंग होगा. बिकॉज लोगों को एट द एंड एक अच्छा डेवलपर वो होता है कि जो आपका कोड बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं. सो देयर इज अ पर्सन, आई डोंट नो, शायद जॉन पापा, जिनकी बुक थी द क्लीन कोड, कि लाइक आपने एक ऐसा कोड लिखा जिसको समझने में टफ है, दैट मीन्स कि योर कोड इज वेरी वेरी बैड. बट इफ यू राइट एन अ कोड लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी में, कि इन टर्म्स ऑफ यू हैव मेंशन द कमेंट्स, and any developers, like any set of developers can understand, they can work on it, they can make it more scalable code, that means that is a very very clean code. सो ये स्क्रिप्ट थी, ये जो एक्मा स्क्रिप्ट थी, जिन्होंने बेसिकली अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी थी. ये गाइडलाइंस थी कि आप जावास्क्रिप्ट को ऐसे ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज like you can define the functions in this way, you can use these type of variables, you can use this type of functionality for making this type of things. So एक्मा ने ये सारी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करी थी. अगर आप एक्मा के थ्रू जो गाइडलाइंस दी हुई है जावास्क्रिप्ट को लिखने की, वो गाइडलाइंस को आप फॉलो करते हो, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन अ एक्मा स्क्रिप्ट पार्ट. So JavaScript और ECMAScript में कोई डिफरेंस नहीं है. The difference is like ECMAScript is more about you are following the guidelines provided by the ECMA. ECMA is set up organizations. ओके, सो एक्मा ने मार्केट में होती है ये जो अपनी स्पेशलाइजेशन थी, ये गाइडलाइंस थी, ये प्रोवाइड करना चालू करा था 1997 से. सो इसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया ES. सो जैसे कि बोलो ECMAScript 2015 which is called as ES6. तो इफ यू आर इन द बिगिनर फेज ऑफ योर करियर, सो जनरली क्या प्रेफर करा जाता है कि लाइक अगर आप हायर कर रहे हो, लाइक इफ यू आर हायरिंग और मे बी इफ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, सो बेसिकली दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस लाइक ECMAScript का आपको नॉलेज है तो कौन सा लेवल का नॉलेज है, the ES6, ES5, ES7, ES10, ES11. So this is a set of guidelines provided by the ECMA organizations. You can find more informations कि like आप just search करोगे ना ECMA,
तो उसके बारे में पता चलेगा कि एक्मा क्या करती है, हर साल अपनी गाइडलाइंस इंप्रूव करती है. सो जैसे आपने सुना होगा वेयर लेट कॉन्स्ट, राइट? तो इनिशियली वेयर कीवर्ड था, बट मार्केट में अब लेट आ गया, उसके बाद फिर कॉन्स्ट आ गया, और भी मार्केट में और नए कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, बिकॉज एक्मा इज वर्किंग ऑन इट. इट्स अ इट्स अ सेट ऑफ कम्युनिटीज और ऑफ डेवलपर्स हु आर वर्किंग ऑन इट कंटिन्यूसली कि कैसे इन चीज़ों को और अच्छा स्केल कर सकते हैं. So at the end, this is just as a concept, the guidelines provided by the ECMA, like there is no such kind of कि like आप ये use लो ECMA, but again, at the end, we as a developer, we need to follow the standards. Like ऐसा तो है नहीं कि कोड आप कुछ भी लिख लो और कुछ भी चल गया, बाद में पता चला कि गड़बड़ी हो गई. So at the end, we need to follow the standard, and we can follow the standard with the help of ECMA. So ECMA ने एक standard follow कर दिए कि like they have introduced like callback functions, they have introduced like higher order functions कि like जैसे आपने सुना होगा filter है, map है, reduce है. So ये सारे ये जो guidelines इन्होंने provide करी है, ये ECMA ने करी हुई है. So अगर आप देखोगे ना कि like ES6 versus let's say ES10, तो उसमें क्या difference था? तो उन्होंने कई नए functions introduce करे. अब ये भी है कि लाइक अब वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो फंक्शनलिटी आप यूज करना चाहते हो. वी एज अ डेवलपर, इफ यू वांट टू यूज, अदरवाइज यू कैन यूज द रेगुलर फंक्शनलिटी ऑफ द जावास्क्रिप्ट. बस ये कि एक्मा की आप गाइडलाइंस लोगे तो कोड आपका अच्छा होगा, फंक्शनलिटी अच्छी होगी, बट द कोर कॉन्सेप्ट लाइक द जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट से भी वो चीज अचीव कर सकते हो. बट अगेन आई प्रेफर यू टू यूज एक्मा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट. बट ये कि एक्मा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट भी ऐसे है कि लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. We need, whenever we are creating a web solution, we just need to ensure that our web application will support on numerous browsers. Like जैसे कि मैंने आपकी एक एप्लीकेशन ऐसी बना दी जिसकी एक डिपेंडेंसी है कि लाइक वो एप्लीकेशन को आपको एक्सेस करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज उसके जो सिंटेक्स है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में पड़े और वही रन होंगे इस ब्राउजर पे. दैट इज अ मोस्ट टिपिकल टास्क. So I'll give you the simple example. Let's say if you want to go to the US, right? So US में आपको जाना है तो you need to apply for the US visa. तो US visa के लिए आपको fill करना पड़ेगा DS-160 form, and there is a applications DS-160 form for the US. So जैसे ही आप US की वो जो applications open करोगे, you need to fill the form, और वो fill form करते वक्त वो बोलेगा कि you need to use Internet Explorer, बिकॉज उन्होंने जो कोड लिखा गया है जावास्क्रिप्ट का वो इतना वैसा लिखा गया है कि मीन्स उसकी परफेक्ट फंक्शनलिटी के लिए आपको यूज लेना पड़ेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर. इफ यू आर यूजिंग क्रोम, इफ यू आर यूजिंग ब्रेव, इफ यू आर यूजिंग एनी ब्राउजर, तो सम टाइम यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ चैलेंज कि आप टाइप करोगे, आपका वो वैलिडेशन नहीं होगा. यू विल फाइंड कि बटन ही नहीं आ रहा है, बिकॉज वो वेबसाइट होती है वो डिजाइन करी गई उसी टाइम के लिए, मतलब 2000 मान लेते हैं, बहुत पुराने टाइम में जब वो एडोबे फ्लैश चलता था मार्केट में. तो वो है कि देयर इज अ लाइक एज अ डेवलपर वी नीड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस कि लाइक जो भी अपन ने वेबसाइट बनाई है और द वेब सॉल्यूशंस वी हैव प्रपोज्ड, or maybe the functionality we have defined with the help of JavaScript, the functionality is supported by the browser or not. Because जैसा मैंने mention करा था कि like in the market we have a multiple browsers, and inside the browsers we have a multiple JavaScript engines like Chrome, V8, SpiderMonkey. तो जनरली क्या आता है कि वी एज अ डेवलपर वी आर फोकसिंग ऑन Node.js, वी आर फोकसिंग ऑन द Chrome V8. तो जो वी एज अ डेवलपर वी आर फोकसिंग ऑन द Chrome V8, तो अपन को जो भी वेब एप्लीकेशन बनानी है वो वेबसाइट ऐसी बनानी है कि जो जावास्क्रिप्ट के कोड है वो हमारे कॉम्पेटेबल होने चाहिए Chrome V8 में. और जहाँ जहाँ Chrome V8 यूज हो रहा है, और मे बी Chrome V8 से जिन्होंने मतलब कोड को यूज करा है, मे बी बिकॉज Chrome V8 इज अ ओपन सोर्स JavaScript engine. Like I can create my own JavaScript engine because Chrome V8 is open source. उस कोड को मैं GitHub से लूंगा, मेरे हिसाब से कस्टमाइज करूंगा, एंड देन आई कैन रन. तो वो सारा पार्ट है. इट्स ऑल अबाउट द compatibilities, support. There are multiple things in terms of developer point of view. So that's it. Like अगर if you have any questions, I'll definitely answer to your questions, or I'll give you the demo. Okay, no worries. So I'll share my screen. I'll give you the simple demo. अभी मैं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट कवर नहीं कर रहा हूँ. I'll give you the simple example, like कैसे मार्केट में जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट चल रहा है और ये कैसे अपन वर्क करते हैं. Then we can, like, based on the feedback, then we can host another meetup like on the JavaScript advancement कि जहाँ मैं in depth बताऊंगा in terms of the browser point of view, in terms of the engine point of view, कि like how JavaScript code is going to run on the JavaScript engine. So I'll give you the simple demo. Like here I have a like
I'm using Mac OS. So here I can create another file. So let's create a open a VS Code editor. Okay, so this is my open VS Code editor. I can create a JavaScript file. So let's say मैं JavaScript file create करता हूँ app.js. And in JavaScript, so basic we have a function is called as console.log, or console.log. Here I can write hello. Okay, so what I'll do, I'll just go to the JavaScript folder. I can open this JavaScript file. It's running, right? But ये JavaScript के कोड फाइल होते हैं आपके रन नहीं हो रहे, बिकॉज वो console.log होता है, वो आपका रन नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने JavaScript की फाइल डायरेक्टली मैंने क्रिएट करी है, और ये JavaScript की फाइल को मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ. तो ये मेरा मैक मशीन क्या कर रहा है कि ये डायरेक्टली फाइल को रीड कर रहा है, बट दिस इज नॉट एग्जीक्यूटिंग माई JavaScript फाइल, बिकॉज ये फाइल को रीड करना हो गया, बट ये राइट मतलब वो कॉल नहीं कर रहा है एग्जीक्यूशन. सो बिकॉज क्योंकि अभी मेरे पास लेट सपोज मेरे पास Node.js नहीं है, तो आई कैन नॉट रन द JavaScript कोड, दिस JavaScript कोड without like browser. So I need a browser. So browser के through मेरे को वेबसाइट को कॉल करना है, तो let's create a website, the HTML page index.html. So I've just created a basic syntax for the HTML. I just added a script tag, and here we can add script src and फाइल को लिंक कर दिया. So जैसे ही मैंने फाइल को लिंक करा, और फिर मैं अब फाइल को ओपन करूंगा index.js को, और if I'll go to the inspect element, the Chrome developer tools, and here we have a section called as console. So ये कंसोल में आपको ये जावास्क्रिप्ट फाइल को एक्सेस मिल जाएगा. दैट मीन्स कि जो मैंने इनिशियली बताया था कि लाइक इनिशियली जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज द क्लाइंट साइड लैंग्वेज. दैट मीन्स कि लाइक वी हैव अ जावास्क्रिप्ट इंजन इन द ब्राउजर, and we need to create a HTML file, and we need to inject the JavaScript code inside the HTML file, and then we can run the JavaScript code. This is how we are running the JavaScript code. So this is a part of the client side language. Like यहाँ से भी अपन we can access the JavaScript engine. कि like जो Chrome V8 engine है, here we can access. So let's create a variable. Like in JavaScript, we can create a variable with the help of let or where or the const, or we can create directly variable without these variable where the concept. So let's say I'll define a variable a is equal to 5. I can enter, I can print the value of a. So यहाँ से भी आप पूरा का पूरा जो JavaScript का the Chrome V8 engine you can access. Here we have a multiple functionalities, like you can access the document. So document is more about ये जो HTML वाला part है, आप यहाँ से access कर सकते हो कि like initially मैंने ये document create करा है. This is a web document. So here like with the help of document you can read this HTML code. ये जो मैंने लिखा हुआ है कि like head section, this sections. So like अगर आपने JavaScript में like थोड़ा सा और अच्छा वर्क करा होगा, तो there is a concept of document.getElement by ID, right? So that's how we are writing. Like document means this HTML file. Let's say I'm defining a document, and then we have a paragraph. Here I am defining the ID as a data, and here I'll write hello. So I'll reload. So let's say I'll write document, which means the HTML file. ये पूरा का पूरा आपका HTML मिल गया. अब इस डॉक्यूमेंट में मेरे को वो वाला एलिमेंट मेरे को पिक करना है जिसकी आईडी क्या हो, आपकी डेटा. सो हियर वी कैन राइट document dot get element by ID, right? So there is a multiple functionalities. ये पूरी की पूरी आपकी functionalities डिफाइन करेगी ये Chrome V8 इंजन में. जो मैं जो भी लिख रहा हूँ सारा का सारा Chrome V8 इंजन में. I cannot create my own functions until अगर मेरे को कुछ JavaScript engine का और अच्छा enhancement या फिर मेरे को in-depth knowledge नहीं है, I can also create multiple things. So let's say document.getElement by ID. Here we can mention data. So this will give you this element. So ये सारा आप perform कर सकते हो. अगर इसकी आपको value collect करनी है, तो you can mention the value and dot value cannot access. Okay, so this is not an input field. Inner HTML. Yeah. Inner HTML is more about you need to Inner pass text. Yeah. So there are multiple functionalities, like you can get okay, and like there are multiple things जो आपका HTML पे भी वर्क करते हो, तो at the end ये सारे HTML के element भी है, ये आपके define करे गए हैं as an interface. Like these all are the collections. Like if you are using the body tag, so which is called as HTML body tag, so you can find this informations.
like ये मैं next event में I can work on it, like ये सारे HTML tags कैसे बने हुए हैं predefined, because there are some set of because HTML, CSS and JavaScript is morely handled by the open source communities. There is a community called as W3, अगर आपने सुना होगा, Web3 or not Web3, W3. सो बेसिकली ये वेब W3 कम्युनिटीज वो क्या करती है कि लाइक जैसे गूगल के इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स, दे आर working on these languages, like how we can enhance, what type of functionality we can add in futures. क्योंकि because ये अगर initially बात करूँ तो we have a HTML, then we HTML 4.1, then we have HTML5, or maybe after 2030 there will be a possibility कि we can work on the HTML6. So ये सारी versioning है. There are some sort of text they have defined. There are some sort of functionality that we can work on it. अगर आपने सुना होगा कि we can create a dialogues with the help of HTML, so you can do multiple things with the help of these things. So I'll suggest you to search W3C. So you will find like informations like कैसे ये पूरा का पूरा word wide informations कैसे work कर रही है. You here you can get the informations like W3C HTML5. सो ऑफिशियली आपको पूरा का पूरा ये जो डॉक्यूमेंटेशन है कि लाइक HTML फाइल का मार्केट में क्या है, और लास्ट ये जो वर्किंग करा गया था HTML5 पे, ये किसने वर्क करा था, हियर यू कैन गेट द मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस कि ये कैसे वर्क कर रहा है, बैकग्राउंड में एलिमेंट्स, ये सारा का सारा आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो लेट्स से इफ यू आर वर्किंग ऑन अ पैराग्राफ एलिमेंट, तो पैराग्राफ एलिमेंट में कैसे वर्क करते हैं, तो पैराग्राफ एलिमेंट के लिए दिस इज अ इंटरफेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर because at the end in the browser we need to check like whether this element is exist or not. So whenever you are writing the paragraph p tag, so there is a this particular interface is available inside the browser that will responsible for showing your paragraph. Okay, so this is just a basic example like I've shared about the web developer ecosystem and the JavaScript part. अभी मैंने कोई advancement में नहीं बताया, is all about the basic overview, like how HTML is working, how I'll not talk about the CSS in depth, but CSS is more about the designing part, and then I talk about the JavaScript, the basic functionalities like JavaScript market में क्यों use ले रहे हैं, क्या क्या इससे कर सकते हो JavaScript से. Again, like there is no such specific difference, like you can achieve multiple things with the help of core JavaScript. Like again ये options है कि like जैसे कि मैं बात करूँ कि like if you want to go to let's say Ahmedabad from Delhi, so there is a multiple route, like you can go via road, like पैदल चल के चले जाओ, कार लेके चले जाओ, बाइक लेके चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, बाई फ्लाइट से चले जाओ. It's totally based on your convenience, right? So similarly, like we can create multiple things with the help of code languages, or if you want to make these things, you can use the framework or the libraries. It's totally up to you. But again, it's based on the problem statement, like whether in terms of resources, timeline, there are multiple things, budget. So ये सारा ये factors multiple define करते हैं कि like आप कैसे ये applications को achieve करते हो, problem पे कैसे work करते हो, उसका क्या proposed solution introduce कर रहे हो, what will be the cost in terms of the resources and the timeline part.